When you find yourself flying above lush green coastal lands, seeing all sorts of bananas and coconuts lined up on the roadside, and the fragrance of fresh leaves entering all your senses, know that you are in God's own country, Kerala. And on this backpacking journey of South India, I begin with the most beautiful road trip of Kerala, from capital city to the tea garden paradise Munnar. And on the way, we will experience the scenic roads, waterfalls, and the joy of the mountain journey in South India. So guys, as you can see right now, I am in Kerala having this coconut water because this is the beginning of my another travel series of backpacking in South India, starting from Kochi to Munnar. तो ये वीडियो में पूरा आपको मैं दिखाऊंगी कैसा रास्ता होने वाला है, हाउ आर वी गोइंग टू गेट द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ मुन्नार. एंड दिस होल ट्रैवल सीरीज विल बी अबाउट द साउथ इंडिया. तो बहुत सारी प्लेसेस मैं कवर करूँगी, मुन्नार, कोडाई कनाल, ऊटी एंड सम ऑफ बीट एज वेल. तो टू गेट टू दैट सरप्राइजेज यू नीड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, राइट. एंड अभी मैं अपने नारियल पानी को इन्जॉय कर रही हूँ. इट्स रियली नाइस, रियली स्वीट. और रास्ते बहुत खूबसूरत है बिकॉज ये शहर काफ़ी प्रिटी है, फुल ऑफ ग्रीनरी. डिस्पाइट बीइंग अ कैपिटल सिटी, it doesn't feel like a city, it feels more like a modern village, you can say. So the drive to Munnar is around 5 hours, but it is so scenic that it doesn't feel that long. And along the way, you can have some amazing experiences too. One such is having authentic South Indian biryani. Whenever you are coming to Kochi, you will experience a lot of beautiful churches here. One is right behind me, as you can see. इसके आसपास इतनी ज़्यादा खूबसूरती है, it enhances its spirituality. So if you're coming to Kochi, this is one experience which you can have here. I don't have time to stay in the city and explore, but मुझे पक्का पता है next time I'm going to stay in this city for a day or two at least and explore around because बहुत प्यारा शहर है, बहुत खूबसूरत है. And greenery आप देख लो. So after covering for an hour or so, the city was left behind and we were entering the clouds, witnessing the mountains of the south, which often go ignored. But on this backpacking trip, I am going to explore the best of the mountains of the south. और इन पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ाते ही बादल, और इन बादल के साथ ये बारिश, making the drive worth remembering. On the way, there are so many waterfalls that you'll even lose the count of it. But there was one such which was standing right there with its gushing waters. The Chiapara waterfalls, easily reachable and huge enough to make you stop by and admire it. So guys, when you're coming to Munnar via Kochi, आपको बहुत सारे waterfalls दिखेंगे रास्ते में. One you can see behind me. This is one of the most famous waterfalls of Munnar, not Kochi. ये बीच में ही पड़ता है. So it's Chiapara waterfalls. And I have been here before, guys, but this time I can see the beauty of this waterfall is like immense because अभी recently rainy season चल रहा है and yes, so rainy season चल रहा है, तो उसके वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया waterfall. It's so heavy right now कि यहाँ से पूरा नीचे तक गया है. I'm gonna show you. And the opposite side, the view is even more amazing. Let me show you.
So guys, Chiapara waterfalls के बाद you can take a halt at Valara waterfalls. So it's a beautiful waterfall and the brownie point is you won't find any crowd here because ये दूर से है तो काफ़ी लोग इसको इग्नोर करके चले जाते हैं. बट होता है ना कि जिनको आप इग्नोर करते हो अक्सर वो ही जेम ऑफ अ पर्सन निकलते हैं. तो दिस इज दैट जेम ऑफ अ वाटरफॉल एंड यू कैन सी दूर से कितना प्यारा लग रहा है. हमें से ग्रीनरी अराउंड और वो झरना पूरा वाइट पानी का बह रहा है. And it's really gushing because of the rainy season, monsoon here. So I'm enjoying some time here in peace because यहाँ पे बिल्कुल crowd नहीं है and रास्ता और खूबसूरत हो रहा है. So I'm sure this 15-day backpacking journey is going to be really beautiful. इसके बाद हम मुन्नार पहुँचने वाले हैं and I'm super excited to see कि वहाँ कैसा weather होने वाला है. Is it raining there or not? We'll find out. So I'm at Munnar Eco Park. Here you can explore some, native animals and birds of Munnar and this region. तो ये recommend करा है मेरे driver ने. So I'm gonna see and I like exploring wildlife of a place. तो यहाँ पे अंदर जाते हैं, देखते हैं इस पार्क में हमें क्या दिखता है. And you stay tuned with me. अंदर जाके कहते हैं कोई स्नेक के साथ पिक्चर भी होती है, फोटो भी क्लिक होती है विच माई ड्राइवर हैज़ अगेन रिकमेंडेड. लेट्स सी के वो भी अंदर मिलता है कि नहीं. और अभी मैंने टिकट ले लिया है. I'm gonna go inside. Guys, this park is really awesome. I've just started and I can find some really exotic species of birds yet. Although I feel a little, sad for them, they are caged for us. But still, I'm thinking of the positive side, when they are in this setting, they are being fed well, they are being treated well. In natural surroundings also, animals and birds are not safe because of us. एंड अभी मुझे एक बहुत यूनिक सी बर्ड दिखी है विच इज़ ग्रीन विंग मकाओ, जो आपने देखा होगा इन सम कार्टून्स एंड पिक्चर्स और ऑन डिस्कवरी चैनल. बट आई फाउंड इट राइट हियर एंड आई एम जस्ट सरप्राइज्ड एंड आई एम जस्ट लाइक ऑ इंस्पायर्ड. टॉकिंग पैरेट. अभी इसे मुझे हेलो हाय बोला. नॉट श्योर अभी कैमरा पे बोले गया नहीं. तो 2 बार बोला हेलो हेलो हाय. अभी नहीं बोलेगा वो, बट मुझे बोला.
if you are wondering what am I doing here, I'm actually exploring a chocolate factory in Munnar, and this you again get to see when you're coming from Kochi to Munnar. A very nice, cozy factory. So they showed us a small video of the process, the whole process of chocolate making. And I am a chocolate connoisseur, so how could I skip it? And कहते हैं ना कुछ भी शुरू करने से पहले कुछ मीठा हो जाए, तो यहाँ कुछ मीठा हम टेस्ट करेंगे. And then we'll finally head to our hotel in Munnar. वेल मीठे से शुरुआत तो हो गई और इस खराब मौसम और रास्तों को क्रॉस करके हम फाइनली पहुंच गए अपने ऑफ बीट स्टे. अब आगे की जर्नी कैसे होने वाली है, that you'll get to see in the next part of this backpacking trip. So stay tuned.